Good morning, dear students. Welcome back to your online classes. In last class, we have discussed about the matter kinetic theory of matter. Means arrangement of molecules in the different state of matter. Different state of matter. Okay, clear? How molecules are arranged in the three state of matter, that is solid, liquid and gas. Okay, clear? Today we will discuss about a new topic, surface tension. Surface tension. Clear? We know that now when we put a small drop of water on a surface or a small drop of mercury on a surface, the shape of the both drops are different. जब भी हम एक वाटर का ड्रॉप की सरफेस पे पुट करते हैं, ठीक है, गिराते हैं, ओके, तो वाटर कैसे होता है? इट बिकम्स स्प्रेड आउट ओवर द सरफेस. सरफेस क्या होता है? वो स्प्रेड रहता है, ठीक है. और मर्करी क्या होता है? व्हेन यू जस्ट पुट ओके फॉल ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ मर्करी, जब मर्करी का कोई ड्रॉप जब करते हैं वो क्या होता है? इट बिकम्स ए ओवल शेप में, ऐसे ओवल शेप में आता है ना. मर्करी क्या होता है? वो ओवल शेप में आता है. और वाटर का मर्करी का जो होता है वो किस शेप में आता है? आपका मर्करी का ये ड्रॉप है, ओके, और ये वाटर का है. ये क्या होता है? एक फिल्म के फॉर्म में. फिल्म इज एक पतली फिल्म बन जाती है. इसकी मेम्ब्रेन के फॉर्म में क्या होता है? वो इस पे जाता है. और ये ओवल शेप में, ये किस तरह? ओवल या स्फेरिकल शेप में ये होता है. ओवल और स्फेरिकल शेप. स्फेरिकल शेप में ये आपका वो क्या होता है? अपने आप उसमें ये कन्वर्ट जाता है. क्लियर? ओके. जब भी हम क्या करते हैं? when we put or fall a drop, a small drop of water on a surface, we have like a what? Membrane, a stretched membrane. Here means the water drops becomes a sprayed film. Sprayed film, एक पतली फिल्म की तरह वो फैल जाता है. लेकिन in case of mercury, what happen? When we will just drop a small drop. When we fall a small drop of what? Mercury on the surface, it just becomes an oval shape. Contain an oval shape. Spherical shape के लिए हो जाता है. क्यों? Due to the unbalanced cohesive force between the molecules of what? Water and mercury. हम जानते हैं ना, we know that every object just attracted towards the earth due to its gravitational force or gravity. कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? अर्थ की ओर अट्रैक्ट होता है ना, विद द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. ओके, क्लियर? सो हियर व्हेन ए वाटर कंटेनिंग ए वेसल, so the force of cohesion between the molecules of water just try to stretch this surface, try to make a stretched membrane. जब भी क्या होता है, हिंदी में देखो, ये वाटर का ड्रॉप है, ओके, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल से ओनली वन मॉलिक्यूल, ओके. यहाँ पे क्या होता है? The neighboring molecules of these molecules, okay, apply the force of attraction. It is the force of cohesion. We know that the intermolecular force of attraction between the molecules of same substance is called force of cohesion or cohesive force. यहाँ पे क्या होता है? Each and every molecule of water just attracted by the other molecules. That is the force of cohesion or unbalanced cohesive force. So what will happen? The molecules, each and every molecule stretched by the neighboring molecules. जो पड़ोसी molecules होते हैं उनसे क्या होते हैं? रिले होते हैं. So the top layer of the water and liquid, okay, just
becomes behaves like a stretched membrane. Stretched membrane. Clear? Okay. And in case of mercury, mercury में क्या होता है? In case of mercury, molecules of mercury within its main mass will not experience any unbalanced force. Okay. However, the molecules near the edge will be pulled inward, okay, because of the unbalanced force of cohesion acting on them. However, these molecules will not move inward, as their movement shall be opposed by inner molecules. The results in tension in the molecules near the surface, thus the surface molecules align themselves such that no unbalanced force act on them. In doing so, the liquid takes a spherical shape. But what happened in case of mercury? इसमें क्या होता है? इसमें जो molecules होते हैं वो neighboring molecules attract होते हैं. But here यहाँ पे क्या है? The force of attraction means cohesive force is maximum with the other surface molecules. इसके other surface से ज़्यादा strong होता है. So that's why the molecules are just attracted to each other, okay, toward downward direction. यहाँ क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स होता है वो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? वही मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं ना. सो दैट्स व्हाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द फोर्स ऑफ कोहेशन हियर इनवर्ड और दे से दैट डाउनवर्ड अंदर की ओर लगता है. सो इट विल फॉर्म ए ओवल शेप ना. हियर ओके. आपने फील किया होगा कि जब भी हम कोई वाटर ड्रॉप जो है डालते हैं सरफेस पे तो वो फैल जाता है ऐसे ही, लेकिन जब कोई मर्क्यूरी का ड्रॉप डालते हैं सरफेस पे तो वो इस बिकम्स से स्फेरिकल शेप, स्फेयर के शेप में बन जाता है ना. ओके. ओवल शेप में ड्यू टू द हियर अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ कोहेशन एंड हियर ड्यू टू द फोर्स ऑफ कोहेशन एक्ट्स ऑन विद द टू सरफेसेस. ओके. सो टेंशन मींस tension. So here force of attraction between two molecules also, here also यहाँ भी force लग रहा है दो molecules, यहाँ सब इस ऐसे molecules के बीच में यहाँ भी apply हो रहा है ना. So they will become what? Form a tensile force. They forms a tensile force. Here in the horizontal means in behaves like a stretched membrane form, and here in the shape of oval. Okay. So finally we can say that if a similar drop of water is poured on a glass top, it takes an oval shape. Okay, it is because force of cohesion between the molecules of water is far less than force of addition with the molecules of water and glass top. Okay, and in case of mercury, when a small drop of mercury is poured on a glass top, it takes a spherical ball on account of surface of tension. In case of in case of mercury, what happened? It will just make a shape of sphere, and here either stretched membrane, flat film or oval shape. Here spherical or oval, here stretched membrane. It behaves like a stretched membrane. We have water drop, behaves like a stretched membrane. Either oval shape. Okay, here oval, either oval shape. Here, but here only spherical. Here spherical. Due to the unbalanced cohesive force is strong in case of this with as compared to adhesive force. Here unbalanced cohesive force is just weaker to that with the other surface adhesive force. Here, okay. तो टेंशन जो प्रोड्यूस होता है टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन. मींस surface टेंशन प्रोड्यूस होता है मींस द मॉलिक्यूल्स व्हिच जस्ट एग्जिस्ट एट द टॉप सरफेस ऑफ द लिक्विड जस्ट stretched means attracted by the other molecules toward in all directions or inward direction. In all direction, in inward direction. In case of spherical mercury and in case of water. Clear? So finally we can say that surface tension, the phenomena due to which the top surface of a liquid contained in a vessel behaves like a stretched membrane. Behaves like a stretched membrane.
मतलब किसी लिक्विड, कोई भी कंटेनर में लिक्विड रखा है, ओके, और किसी कंटेनर में कोई लिक्विड रखा है, तो व्हाट इज द शेप ऑफ द टॉप सर्फेस ऑफ लिक्विड, आइदर कॉन्केव और कॉन्वेक्स, कॉन्केव और कॉन्वेक्स. क्लियर? So this particular shape or of the top surface is called meniscus. The formation of a curved surface by top surface of a liquid containing narrow vessel is called meniscus. This formation due to the unbalanced cohesive force, due to the unbalanced cohesive force की वजह से जो इस surface का जो formation होता है, clear? It is called meniscus. इसको क्या बोलते हैं? Meniscus. What? Meniscus. Okay? So, in case of mercury, mercury में कैसा होता है? Convex. जो mercury केस में है, mercury केस में, this is the convex. And in case of water, concave. In case of water, what? Concave. Okay? Due to the unbalanced cohesive force of and adhesive force between two surfaces and same molecules. Clear? Okay? So, see in first one, this one, case of mercury. In case of mercury, a convex meniscus is formed. It is because the molecules of the mercury have a strong force of cohesion. इसमें बताया हुआ है, just I told ना, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मर्करी में उसमें क्या होता है, the force of attraction with the two molecules means same substance, it is very strong, okay, but no force of adhesion with glass. लेकिन इसमें जो यहाँ पे जो है फोर्स है, ग्लास के साथ जो फोर्स होता है यहाँ पे, ओके, वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है. So that's why it will form this thing. Force of adhesion, cohesion is stronger than adhesion. In case of mercury, okay, but no force of adhesion, मतलब ये नेगेटिव होता है, इन इसकी कोई वैल्यू नहीं, negligible, okay, force of adhesion is negligible, or we can say that zero, here zero, but force of cohesion is very strong, here with the molecules of mercury, okay. Thus, as a molecules of mercury near the exposed surface are pulled inward. इसलिए जो molecules क्या होते हैं, वो नीचे की ओर inward होते हैं, pull होके किए जाते हैं, due to the force of attraction of cohesion. But in case of water, concave meniscus form. How? It is because the molecules of these liquids have far stronger force of adhesion with the glass surface. यहाँ पे क्या होता है, जो force of adhesion है, force of adhesion is stronger than cohesion force, stronger than cohesion force. Clear? A weak force of cohesion amongst themselves, thus the molecules these liquids are pulled up a glass. वो molecules एक दूसरे को क्या करते हैं, ग्लास की लेयर में यानी ऊपर की ओर pulled up, इसमें क्या होता है, pulled up, ऊपर की ओर खींचते हैं, और यहाँ पे pulled down, नीचे, downward, because here cohesion force is stronger than the adhesion becomes zero, okay, but cohesion force is more, the force of cohesion is more, okay. And here in case of water, adhesive force is more, means the force of attraction between the water molecules and glass surface, it is maximum as compared to force of cohesion, means the force of attraction between the molecules of water. So that's why the molecules of water just pulled upside, and here the molecules of mercury pulled downside due to the maximum force of cohesion here, and here maximum force of adhesion. So it will form convex meniscus, it will form concave meniscus. Clear? Okay. So finally we can conclude that surface tension means what? Tension produced in the top surface, exposed surface of a liquid. Either it may be convex or concave meniscus by the
concave or convex meniscus. Means the phenomena due to which the top surface of a liquid behaves like a stressed membrane. Behaves like a stressed membrane. Clear? It is called surface tension. Tension to na? Tension means tanav. Means tension force. So here we know that now to any two molecules, the force, there is a force of attraction between the two molecules or two or more molecules of a matter. किसी मैटर्स के दो मॉलिक्यूल्स या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है. इट मे बी कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स. इन केस ऑफ मर्करी इट cohesive force is maximum as compared to adhesive force. Cohesive force means the force of attraction between the molecules of mercury, and adhesive force, the force of attraction between the molecules of mercury and molecules of glass matter. Okay, so it is cohesion is strongest than adhesion. Adhesion you can say that next level 0. So that's why the molecules of mercury just pull downward, inward. And here in case of water, the molecules of water and the molecules of glass, there the force of adhesion is very strong. So that's why the molecules of water is pulled upward, pulled up. So it will form a concave meniscus and it will form a convex meniscus. Meniscus clear? What is meniscus? Meniscus means how we can define the meniscus? The formation of the curved surface. The formation of curved surface by the top surface of a liquid. Top surface of a liquid contained in a vessel. That is called meniscus. मतलब किसी वेसल में कोई लिक्विड रखा हो तो उसके टॉप सरफेस का जो स्ट्रक्चर है, कर्व सरफेस, वो कैसा है? इनवर्ड है कि आउटवर्ड? आउटवर्ड है तो कैसा होगा? यहाँ पर इनवर्ड है तो कैसा होगा और आउटवर्ड है तो कैसा होगा? Clear? Okay. So in case of this, we can say that here convex and here concave. Clear? Next point is what? Expression of liquid pressure, okay, gas pressure and heat conditions. These 3 points we will discuss in next class. Okay. Thank you, class.